Now we are about to start the effectiveness of monetary and fiscal policy in generating internal and external balances. So now we are doing basically internal and external balances through monetary and fiscal policy mix. Monetary and fiscal policy mix with the help of ISLM BP framework. This is exactly we are going to talk. Now, as we know that as far as the internal balance is concerned, to show the internal balance, we use IS and LM curve. ISLM use करते हैं. IS represents the equilibrium in the goods market at a domestic level, and LM represents the equilibrium in the money market. So when we take IS and LM, this equality of IS and LM shows the internal balance को show कर रहा है, right? And as far as the BP curve is concerned, BP curve represents the external balance. तो BP curve होता है हमारा balance of payment curve that represents the external balance. So this is our BB curve. ये BB curve है, and if the area over and above this curve represents the situation of surplus in balance of payment, and area below this represents the deficit in the balance of payment, and any point on this line represents the balance in the balance of payment with various combination of rate of interest and output. We have done that. इतना हमने किया हुआ है, right? And when we together takes the internal and external balance, तो हम एक साथ internal और external balance लेते हैं. Then external and internal balance exist where IS, LM and BP curve. अगर हम BP curve लें, suppose this is our BP curve which represents the balance in balance of payment, then this point E, equilibrium, represents the internal and external balance. So this is the simultaneous equilibrium in the internal and external sector with Y income and R rate of interest. Is that clear? Yes, ma'am. Right. So basically, this is the situation where the external and internal both the balances will be achieved. दोनों ही balance जो है वो achieve किए जा रहे हैं. Now we know that at macro level, basically we go for macro policies like monetary policy and fiscal policy in order to solve the problem of unemployment and the problem of inflation. Unemployment growth, या output increase, or inflation. If these type of problems are there, then we take the help of LM and we take the help of fiscal and monetary policy, and we take the help of appreciation and depreciation. Appreciation या depreciation की policy जो है that helps in attaining the external balance. So external balance को help करती है attain करने. Right? Now suppose this internal and external balance through monetary and fiscal policy mix, we will study this under two exchange rate regimes. हम इनको दो exchange rate system में study करेंगे. One, when we are assuming that a country is having a fixed exchange system. अगर country का fixed exchange system है, then how with the help of a monetary and fiscal policy mix the internal and external balance can be achieved. And second, we will see that if we will assume that if country is having a flexible exchange system, then how this internal and external balance can be achieved with the help of a monetary and fiscal policy mix, right? So now we are starting with the first assumption that we are assuming that country is having a fixed exchange system. So हम ले रहे हैं यहाँ पे fixed exchange system.
right? Now in fixed exchange system, now there can be a different types of internal and external imbalances. Different combinations हो सकते हैं internal और external disequilibrium या imbalance के. Suppose first combination which we make of internal and external imbalance लेंगे, and then we will see that how with the help of monetary and fiscal policy we can bring the system from imbalance to a balanced situation. Balanced situation पे कैसे लाया जा सकता है? But just remember one thing, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, it is not essential कि वो fixed ही हो, वो relationship ऐसा ही हो, यही policy mix जो है वही exist करे. We are taking the general cases, हम general cases ले रहे हैं, but the actual choice by the economy can be different depending on the type of a problem in the economy, depending on the type of a situation in the economy, depending on the slope and flexibility of ISLM. So actually in reality, what type of a policy will be adopted by the country, that depend on many factors. But over here, we are taking a very simple and generalized situation, and through this we will get a hint, हमें एक hint मिलेगा that how the balances can be achieved with the help of a proper usage of monetary and fiscal policy, right? But we know that ultimately the effectiveness of these two policies depend on that how flexible is the system. सिस्टम कितना रिजिड या फ्लेक्सिबल है वो हम स्लोप्स में देख चुके हैं कि कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी इनइलास्टिसिटी है ISLM कर्व में. फाइनली जो इफेक्टिवनेस है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की उन चीजों पे भी डिपेंड करती है. बट यहाँ पे एक जनरलाइज सिचुएशंस हम ले रहे हैं कि नॉर्मली अगर इस तरीके की सिचुएशन हो then this type of a policy will be helpful होती है, right? So first situation we are taking कि suppose अब हम क्या लेंगे, एक internal problem लेंगे और एक external problem. Right? Suppose in the case of internal problem, there is internal unemployment. Internal unemployment है. Sorry, not employment, but unemployment. Yes, let me erase this. So first case we are taking, there is internal unemployment plus and BOP deficit. बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डेफिसिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस ये जो आउटपुट है, ये जो इक्विलिब्रियम है, जो आउटपुट है, दिस इज प्रोड्यूस्ड एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस हो रहा है. थ्रू दैट he shows that there is unemployment in the economy में unemployment. So how we will show internal unemployment situation with the help of ISLM and BOP deficit with the help of a BP curve. BP curve से हम deficit show करेंगे. So first combination we have taken that at internal front there is unemployment, output is produced at less than full employment, and there is a problem of deficit in the balance of payment. Balance of payment में deficit. Right, so we will show this with the help of these three curves. इन तीन कर्व्स की हेल्प से शो करते हैं. Here we take rate of interest, here we take output. Suppose this is our IS curve, ये हमारा IS curve है. This is LM curve, ये LM curve है. And internal equilibrium is at the point where LM is equal to IS. So this is Y0 level of output is being produced in the economy, and this is our BP curve. ये हमारा suppose BP curve है. To show the problem of deficit की problem को show करने के लिए we will make the BP curve over and above the equilibrium point. जो हमने ये internal equilibrium लिया है, this point A, which is representing the internal equilibrium. We will keep the BP curve over and above this. इससे over जो है हम BP curve को रखेंगे.
क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था कि अगर बीपी कर्व की जो नीचे का एरिया है दैट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट, सो दैट मींस एक्सटर्नल सिस्टम इज इन द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड इंटरनल सिस्टम में जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, दैट मींस सपोज YF is the level of output at full employment। तो हम क्या, ये दो प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, Y0 से को कम रखो YF से और BP को इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर बना दो, राइट। तो दैट मींस हमारा YF कितना है, YF ये है एंड दिस इज आर Y0, ये हमारा Y0। नाउ to reach the point up to YF there will be change in the LM and IS curve। जो LM IS curve है वो change होंगे with the change in the with the change in the fiscal and monetary policy। Now in order to achieve the full employment को achieve करने के लिए expansionary fiscal policy will be followed by this economy, क्योंकि हमारी जो output है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस हो रही है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल बी adopted by the economy, by the government। So due to this what will happen, IS curve will shift in the outward direction। जो IS curve है वो outward direction में shift होगा from IS0 to IS1। But if we alone go for the fiscal policy, अगर हम अकेले fiscal policy को expand करते हैं, still we can see that with this expansion also in this particular case, इसी case में with this much expansion we cannot achieve the full employment level। हम full employment level अकेले fiscal policy से achieve नहीं कर पाए जो हमने ये shift किया। लेकिन अगर तुम कई बार बच्चे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम यहीं तक shift कर लेते, but that will be a huge expenditure will be required by the government कि तुम पूरा ऊपर ILM तक ही shift कर लो, but still अगर हम IS को पूरा इस point तक, इसी point तक shift कर देते जहां वो LM के साथ touch होता, still it will not be touching the BP curve, it will not be intersecting the BP curve this point। Due to this deficit will still remain, जो deficit है वो रहेगा। So simply in conclusion we can say that if alone the fiscal expansion has been taken up by the government, this fiscal expansion will not be able to achieve full employment and will not be able to, और क्योंकि fixed exchange system है, BP curve will remain stable। तो BP curve है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, हम BP curve को upward या downward direction में shift नहीं कर सकते। BP curve shifts in the upward and downward direction if the appreciation and depreciation is allowed। Appreciation या depreciation allowed होती है, then only BP curve will shift। Now over here we are assuming that there is fixed exchange system, exchange rates are not being changed, because of that BP curve will remain stable on its place, so BP curve will not shift। So if alone we go for the expansion in the fiscal policy, this alone expansion in the fiscal policy will not be able to achieve full employment level as well as it will not be able to cure the problem of deficit। Now what will we do along with this? हाँ जी मैम, अगर हम IS कर्व को LM कर्व के साथ जहाँ पे BP कर्व उसको टच कर रहा है, अगर वहां तक एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कहाँ जाएगा? क्योंकि ये मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना एक्सेसिव रिजर्व्स हैं कि वो इतना ज्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर कर सके जहां उसे मॉनेटरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, then government can go for this, right? But generally so much huge expenditure if done by the government that can create the problem of fiscal deficit की problem create करता है, and secondly rate of interest will increase many folds। rate of interest बहुत ज्यादा increase हो जाएगा इकोनॉमी। इवन इन दिस केस तभी मैंने कहा कि यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे सॉल्यूशन उसी तरीके का आएगा जिस तरीके का हम डायग्राम बना रहे हैं। अगर तुम थोड़ी स्लोप्स चेंज कर दो या थोड़ा इस तरीके का मिक्स करो और तो तुम्हारा हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट आए, राइट। लेकिन ओवर हियर व्हेन वी नॉर्मली मेकिंग द डायग्राम की जो IS और LM कर्व है उनकी नॉर्मल स्लोप्स हैं, राइट। इन दैट केस एंड वी आर यूजिंग द
मॉनेटरी एंड फिस्कल मिक्स, इकोनॉमी में दोनों ही पॉलिसीज का जो है यूज किया जा रहा है, देन व्हाई टू बर्डन ओनली वन सिस्टम, एक ही सिस्टम या एक ही पॉलिसी को या एक ही सेक्टर को आप बर्डन अप क्यों करोगे, राइट? राइट? और इंडिया जैसे अब गवर्नमेंट को इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, स्टिल गवर्नमेंट इज क्राइंग लाइक एनीथिंग दैट वी डोंट हैव फंड्स, इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर इज गिविंग अस द प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बहुत इंक्रीज हो रहा है। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन कि आप सिर्फ एक ही चीज को एक्सट्रीमली चेंज करके आप उस सिस्टम को, उस पॉलिसी को का एक्सेसिव यूज नहीं कर सकते, राइट? So due to this, the policy mix is adopted. थोड़ा बहुत चेंज के लिए, अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो आप एक पॉलिसी का यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज बेटर टू यूज बोथ दी पॉलिसीज। नाउ यू कैन सी बीपी कर्व को हम नीचे, अब यहाँ पे आपने आईएस ऊपर कर दिया, देन यू कैन सी by changing the by following the restrictive monetary policy, अगर इस केस में आपने just look at this carefully, आपने expansion किया क्योंकि हमें YF की तरफ जाना है, right? So आपने expansion करके जो आपका IS curve है, in that case you have reached on this point, इस point पे आ गया, right? Just एक minute, just a second. This is your LM curve and हमें, मुझे एक मिनट इसको, this is your LM curve, this is your IS curve and we want to reach over here. Let me make it again. इस IS curve की, क्योंकि जिस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं, तुम भी यहाँ पे देखते रहो हम इसको ड्रॉ कैसे कर रहे हैं बेसिकली, राइट? जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी मैम, जो अभी टैक्स रेट्स कम किए हैं मैम, उसके ऊपर मेडिकल जो चीजें हैं, रेमडेसिविर और वो सब, तो मैम वो भी एक फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगा? हाँ, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू रिड्यूस किया है, तो मैम वो अप्रिसिएशन, मतलब जो आईएस कर्व है इस केस में, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा ना? हाँ, वो आपका नहीं, जब हम टैक्स रिड्यूस करते हैं देन दैट इज एक्सपेंशन, वो आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को ही शो करता है। रिडक्शन इन टैक्स एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेंशंस हैं, क्योंकि चीजें सस्ती होंगी तो खरीदनी आसान होंगी और लोग, लेकिन ये जो मेडिकल चीजों पे किया गया है, ये जो ये ऐसी चीज है जो इनकम इलास्टिक नहीं है। टैक्स आपका रिड्यूस हो गया, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, बट डिस्पोजेबल इनकम जब आपकी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस, you don't start purchasing these type of goods like remdesivir और ये सब, these are not income elastic, क्योंकि ये आप तभी खरीदते हो जब आपको इनकी जरूरत होती है, otherwise why will you purchase it, right? So ये जो वाली जो पॉलिसी है, ये no doubt it will increase the disposable income in a indirect tax form, चीजें सस्ती हो गई, बट इससे जो है आईएस कर्व पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आईएस कर्व पे इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इनकम इलास्टिक नहीं है, इनकी एक्सपेंशन इनकम के साथ नहीं बढ़ेगी। अब ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करेगी, मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट को जो मेडिकल नीड की रिक्वायरमेंट है, जिनको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उस ग्रुप को इफेक्ट कर रही है, राइट? सो दिस इज योर LM1, लेट मी मेक इट अगेन, ये हमारा Y0 था, हमने लिया, राइट? एंड दिस इज आवर BP कर्व, ये हमारा BP कर्व है, राइट? एंड सपोज दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। नाउ वी विल शिफ्ट दी IS कर्व, हम IS कर्व को शिफ्ट करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव दी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब शिफ्टिंग कैसे करनी है, आई एम जस्ट यूजिंग दी अनदर कलर। हम शिफ्टिंग जब करेंगे तो हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, क्योंकि BP कर्व को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फुल दैट मींस IS LM को BP कर्व तक जाना पड़ेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हमें अचीव करनी है। इन दैट केस we will make use of the expansionary fiscal policy। तो इस केस में हम पहले ही अपने इक्विलिब्रियम, this is the internal equilibrium, ये हमारा इंटरनल इक्विलिब्रियम था। दिस इंटरनल इक्विलिब्रियम वाज इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट, ये डेफिसिट के साथ था क्योंकि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट में था, सो देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज टचिंग द BP कर्व ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टच कर रही है। टू रीच दिस पॉइंट
we will follow the expansionary fiscal policy. हम expansionary fiscal policy follow करेंगे. But you can see when we follow the expansionary fiscal policy, जब हम expansionary fiscal policy follow कर रहे हैं, then the equilibrium जो हमारा external, अगर हम LM कर्व या हम मॉनेटरी पॉलिसी को ना चेंज करें, then again the internal equilibrium will not on the full employment level, it will cross the full employment level. यहाँ पे वो full employment level cross कर रहा है, which will create the problem of inflation in the economy. जो because अगर हम more than full employment पे जाते हैं तो वो inflation problem आ जाती है, right? So due to this what will happen in this particular case, in order to achieve the full employment, expansionary fiscal policy will be followed. जब expansionary fiscal policy follow कर रहे हैं, then alone this policy will not be able to achieve the level of full employment. या तो ये full employment से कम रहेगी या ये ज्यादा होगी. इस केस में जो हमने ये डायग्राम बनाया, we can see LM कर्व को ये हायर पे कट कर रही है, but still there is a problem of deficit. Deficit है, more than full employment है, there can be a problem of inflation. If there is more than full employment situation is there, then in that case, in order to solve this problem, the monetary policy, more restrictive monetary policy will be followed by the system. जो monetary authority है वो restrictive monetary policy follow करेंगी, and LM curve will shift from LM0 to LM1, right? LM1 पे shift हो गया. Now we can see in this particular case, expansionary fiscal policy has been followed and contractionary monetary policy has been adopted by the authority, right? So we can say that in this particular problem, जो policy mix था, in case monetary policy and fiscal policy mix क्या था? To resolve this problem, expansionary fiscal policy has been followed and restrictive monetary policy, जो monetary policy थी वो restrictive monetary policy जो है follow की गई in order to achieve this equilibrium point where the problem of deficit and problem of unemployment get resolved. Is that clear? Right? Clear है ये चीज with the diagram? Okay, so now we will, अब हमने पहला कॉम्बिनेशन बनाया इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीओपी डेफिसिट. सेकंड प्रॉब्लम हम लेते हैं, लास्ट में हम इसका पूरा एक क्रक्स बनाएंगे. सेकंड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, इफ देयर इज इंटरनल इन्फ्लेशन, अगर इंटरनल इन्फ्लेशन है, राइट, एंड बीओपी डेफिसिट, दैट मीन्स हमने क्या किया, इंटरनल दो प्रॉब्लम्स हमने ली, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनदर वन इज इन्फ्लेशन. ये दो प्रॉब्लम इंटरनल है और सरप्लस और डेफिसिट की दो प्रॉब्लम जो है ये एक्सटर्नल. We will make the different combination of these four things. इन चार चीजों के हम different combinations बनाएंगे. पहला combination हमने बनाया डेफिसिट के साथ. डेफिसिट के साथ first combination is if there is unemployment and second combination if there is inflation. तो डेफिसिट के साथ ये दो combination हम बना रहे हैं. First is unemployment, second one is inflation. If there is a problem of inflation, अगर inflation का problem है, then in that case, like for example, ये हमारा है IS curve, this is our IS curve, and this is our LM curve, ये LM curve है. This is the equilibrium point, ये हमारा equilibrium point आ गया. And this equilibrium is at point Y0. Right? And we are assuming that the problem of inflation, if the output is is beyond the level of full employment. अगर output beyond the level of full employment है, then in that case there is a problem of inflation. Inflation की problem है, right? So that means suppose in this particular case full employment is less than the Y0, and BOP deficit means your BP curve is over and above this equilibrium point. जो हमारा BP curve है वो इस equilibrium point से ऊपर है. Now in this particular case, अगर हम ये case देखते हैं, now suppose in this particular case
हम ले रहे हैं कि YF is the level of full employment. जो YF है ये हमारा level of full employment है. Then that means in case in order to solve the problem of inflation की problem को solve करने के लिए restrictive fiscal policy will be adopted by the government. जो गवर्नमेंट है that means we have to reach over there. V curve को हम change नहीं कर सकते. So with the help of these two policies we will reach to this curve, this point. हम इस point तक पहुंचेंगे where the balance in the balance of payment is there with the full employment level and with no problem of inflation. Inflation की problem ना हो. For reaching this point from E to E1, contractionary or restrictive fiscal policy will be followed. Restrictive fiscal policy जो है वो follow होगी. And as far as the monetary policy is concerned, in this case restrictive monetary policy will be followed. जो monetary policy है वो भी restrictive है इस particular case में. Right? Now that means this is LM1. So in this case also, अगर हम यहाँ पे देखें कि पॉलिसी मिक्स हमारा क्या रहा, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, सो रिमेंबर वन थिंग, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो की जाती हैं, राइट. एंड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो एक्सपेंशनरी फॉलो की जाती है. So automatically you will remember this कि अगर unemployment problem है तो तुम्हारे डायग्राम में automatically डायग्राम ऐसे बनेगा कि fiscal policy तुम्हारी expansionary होनी चाहिए if there is a problem of unemployment, and if there is a problem of inflation automatically your fiscal policy will be restrictive. जो तुम्हारी fiscal policy होगी वो contractionary या restrictive होगी. Is that clear? Fiscal policy मैम. हाँ जी मैम, ये जो इससे पहले वाला केस था इसमें ये नहीं क्लियर हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कॉन्ट्रैक्शनरी क्यों होगी. मतलब इसका कोई एग्जांपल लें तो कैसे इसको जब हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, जब वो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड होता है, देन इन दैट केस जो पीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम हैंडल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम उसे हैंडल कर रहे हैं क्योंकि हम एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन विल नॉट टेक प्लेस इन द मार्केट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक्सपेंशनरी, वैसे अगर हम अब फिक्स रेट अगर फ्लेक्सिबल हो, then in that case in order to solve the problem of unemployment expansionary monetary और expansionary fiscal दोनों ही expansionary follow की जाती हैं. और जो deficit का problem है वो आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो क्योर करता है. बट इन केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आप एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं कर सकते, तो आप पीबी कर्व को चेंज नहीं कर सकते. दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन, राइट. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ये चीज ध्यान रखो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फिस्कल पॉलिसी का यूज कर लिया, एक्सपेंशन कर दिया. और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमने, दैट मींस इंटरनल प्रॉब्लम के लिए हमने फिस्कल पॉलिसी की हेल्प ले ली. हमने जो है एक्सपेंशन उस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्शन कर दिया अगर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम. अब डेफिसिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दैट मींस हमारी कंट्री में इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए. अभी डेफिसिट किस लिए है, दैट मींस इन केस ऑफ डेफिसिट payments to the outside world, that means outflow to the outside world is more as compared to inflow. ये मतलब हुआ डेफिसिट है अगर, राइट. सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, we will follow the restrictive monetary deficit की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम restrictive monetary policy फॉलो कर रहे हैं. अगर restrictive monetary policy फॉलो होगी then in that case rate of interest will increase. जो rate of interest है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट more inflow of the capital will take place. जो inflow होगा कब कैपिटल का वो ज्यादा होगा कंट्री में. This is one thing. And secondly, if we are following the restrictive monetary policy, then in order to imports को लेने के लिए, imports को मंगाने के लिए जो availability of money है in the hands of the people, that will be less. Right? उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करने के लिए तो वैसे मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होनी चाहिए ना, क्योंकि होनी चाहिए. यस, यू आर राइट. तभी मैंने पहले ही कहा
क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, in order to solve the problem of deficit, the changes in the fixed exchange rate in the form of appreciation and depreciation cannot happen. यहाँ पे appreciation और depreciation नहीं हो सकती. अगर appreciation या depreciation होता तो आपका ये जो BB कर्व है जो हम आगे करेंगे फ्लेक्सिबल सिस्टम में, ये BB कर्व आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जैसे आपके IS और LM कर्व शिफ्ट हो रहे हैं. Is that clear? So in that case, अगर BB कर्व हमारा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, तो सरप्लस और डेफिसिट की प्रॉब्लम को BB कर्व का शिफ्ट जो है वो उसका ध्यान रख लेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही सॉल्व कर लेंगी एक्सपैंड होकर. दैट इज इफ देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. बट ओवर हियर आई हैव सेड दैट द प्रॉब्लम इज that we cannot change the BB curve with our own wish. हम BB curve को change नहीं कर सकते क्योंकि ये fixed exchange system है, right? Yes. So in that case, in order to solve the problem of external imbalance, we are making the use of the monetary policy और fiscal policy को हमने use कर लिया internal problem को solve करने के लिए. ठीक है? That means हमने इनके role divide कर दिए. मैम मतलब हम इसी के हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा. यस, हमें डेफिसिट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को हटाना, चेंज करना पड़ेगा. लेकिन हम यूज तुम देख रहे हो इस पर्टिकुलर केस में जो अभी यहाँ हमारा केस बन रहा है, हमारा फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा चेंज आया है और मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आई है इस पर्टिकुलर केस. So that is why I have said totally depends on situation to situation. But fixed exchange rate system में क्या होता है कि fixed exchange system में हम इन्हीं दोनों पॉलिसी के थ्रू ही हमें डेफिसिट को भी एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? यस मैम. अब यहाँ पे अब हमारा आ गया if there is internal inflation and deficit. अगेन अगर अब रोल डिवाइड कर लो, यहाँ पे दिमाग में रख के चलो कि हमने रोल डिवाइड कर लिया पॉलिसीज का. हमने फिस्कल पॉलिसी को यूज कर लिया इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हम मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, बट यू विल नॉट राइट इट डायरेक्टली कि हम फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इंटरनल फैक्टर्स पे भी इफेक्ट करेगी. But over here we are simply say that in order to achieve internal and external balance, we will use this mix of monetary policy and fiscal policy. इनके mix को हम जो है use कर रहे हैं. Now in this particular case, fiscal policy क्योंकि inflation है, more than full employment situation है, तो वापस full employment पे जाना है, तो fiscal policy को restrictive कर दोगे, contractionary use करोगे, and still there is a problem of deficit. अभी भी deficit का problem ही हम ले रहे हैं. Deficit की problem को solve करने के लिए हम monetary policy जो है रिस्ट्रिक्टिव ले रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे हमारा यू कैन सी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो एक्सपेंशनरी, अगर इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, और अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है हम रिस्ट्रिक्टिव यूज करते हैं. दैट इज व्हाई यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टिव है और यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टिव. इज दैट क्लियर? राइट? Now, this is basically to show you that how the various combinations of monetary and fiscal policy can be used in order to resolve the problem. But again, I am telling you, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और combinations नहीं होंगे. It totally depends on the condition of the economy. Condition पे depend करेगा, exchange rate system पे depend करेगा कि किस तरीके का जो mix है वो यूज किया जाता है. एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, किस तरीके का जो मिक्स है वो यूज किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का. वी आर जस्ट शोइंग यू दी सम केसेस, हम कुछ केसेस दिखा रहे हैं टू शो यू दैट हाउ दिस कॉम्बिनेशन can be used in order to resolve the internal and external imbalances, right? अब हम first हमने combination लिया with deficit, fixed exchange rate system में internal problems with deficit. अब हम लेते हैं internal problems with surplus, surplus के साथ लेते हैं. So हमारा यहाँ पे third combination हम यहाँ पे ले रहे हैं अब, right? Unemployment, internal unemployment with
BOP सरप्लस, BOP सरप्लस के साथ ले रहे हैं, राइट। नाउ इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट शो करनी है और सरप्लस शो करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वन इनिशियल कर्व IS0 एंड दिस इज आर LM0, ये आ गया हमारे पास, राइट। एंड दिस इज Y0, ये हमारा Y0 आ गया। नाउ वी हैव टू शो दी सर्कल, तो जो तुम्हारा बीबी कर्व है वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे बनेगा, क्योंकि सरप्लस सिचुएशन शो करनी है हमें, राइट। सो सपोज दिस इज योर सरप्लस बीबी कर्व, ये हमारा बीबी कर्व आ गया, राइट। नाउ there is a problem of unemployment, that means production is on less than full employment. So suppose यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारी YF जो है ये हमारा full employment. Now again we have two options, monetary policy and fiscal policy. Now you tell me what will happen to the fiscal policy. Unemployment है, fiscal policy क्या होगी? एक्सपैंड होगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। या इस पॉइंट पे हमें पहुंचना है, बीबी कर्व जहां है उस पॉइंट पे हमें पहुंचना है। सो वी विल गो फॉर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये IS1 हो गया, दैट मींस इसमें तुम्हारी एक्सपेंशन होगा। एंड बिकॉज देयर इज अ सरप्लस, अगर सरप्लस है, डेफिसिट में हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं, सरप्लस में क्या लेंगे? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेंगे। सो इन केस देन यू विल एक्सपैंड इट, इसको एक्सपैंड करोगे तो LM कर्व जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम एक्चुअली ये चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम LM को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। सो वी कैन सी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. Is in this particular case, if there is a problem of internal unemployment and BOP surplus, तो combination हमारा बन रहा है expansionary fiscal policy and expansionary monetary policy. Alone a single policy will not be able to achieve will not be able to create the balance in both the systems. But in order to achieve the balance internally and externally, the combination will be used, and in this particular case, expansionary monetary policy and expansionary fiscal policy will be used. Is that clear? एक्सक्यूज मी मैम, आपने शायद बताया भी होगा बट मेरे को डाउट है कि मॉनेटरी पॉलिसी और जो डेफिसिट है, बीबीओपी का जो डेफिसिट है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? डेफिसिट एक्सपेंशनरी, हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रहे थे, तो वो कैसे डेफिसिट को कवर करती है? अब मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनल, जब मॉनेटरी पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शन आया, देन इन दैट केस, उस पर्टिकुलर केस में excess money to import goods and services, that will reduce in the hands of the people. मैम क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट एक तो उस पर्टिकुलर यस, जो हमारी इंपोर्ट्स पे इफेक्ट है, इस पर्टिकुलर केस में आपका इंपोर्ट्स पे इफेक्ट आएगा। सेकेंडली, when the rate of interest is higher in the economy, it will attract the inflow of capital from the outside world, because rate of interest is higher. मैम कैसे, मतलब जैसे जो FDI है और FII है, वो तो तब नहीं होगा जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, if they earn higher rate of interest on their funds, जब अपने फंड्स को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं लाकर, अगर उन फंड्स पे उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है as compared to their own country or as compared to the rest of the world, then there will be inflow of the funds in the country. कंट्री में जो फंड्स का इनफ्लो है वो बढ़ेगा, because on those funds they can earn higher rate of interest. Yes ma'am. Right? So due to this, ये तुमने international economics में पढ़ा होगा, due to this what happens, in order to earn higher rate of interest, the inflow of capital from the outside world increases in the country. Right? Okay ma'am. Ma'am, when rate of interest is increasing in our own country,
यस, एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कंपेयर करोगे कि कहाँ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, मैं कहाँ अपना फंड इन्वेस्ट करूँ, राइट? तो आप वहां अपना फंड इन्वेस्ट करना पसंद करोगे जहां उस पर आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, दैट विल बी योर अर्निंग। Yes, ma'am. Due to that, inflow of the fund increases, right? So, and in case of surplus, opposite will be followed, right? Yes, ma'am. So, this is how basically दिस इज दी सेकंड मिक्स। ये हमने सेकंड ले लिया सरप्लस के साथ। और अगर हमारी फोर्थ केस बनेगा, केस यही बनेंगे हमारे, फर्स्ट विल बी इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट, बीओपी डेफिसिट, इंटरनल इन्फ्लेशन, बीओपी डेफिसिट, देन इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीओपी सरप्लस, एंड फोर्थ विल बी इंटरनल इन्फ्लेशन with BOP surplus, inflation with BOP surplus, right? Now this is monetary policy and fiscal policy. अब डायग्राम बनाने से पहले ही हम देख लेते हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो पॉलिसी कैसी होती है हमारी, रिस्ट्रिक्टिव होती है कि यस। तो हम पहले ही अपने माइंड में ये कॉम्बिनेशन बना के रख लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमें डायग्राम फिर कैसा चाहिए होगा, राइट? सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो हमें फिस्कल पॉलिसी जो चाहिए है वो हम कॉन्ट्रैक्शनरी या रिस्ट्रिक्टिव लेंगे। और क्योंकि सरप्लस की अब बीओपी की प्रॉब्लम को भी हम इन्हीं पॉलिसीज के साथ जो है डील कर रहे हैं, तो सरप्लस है, देन इन दैट केस इट विल बी, जो यहाँ पे लिया था हमने, इट विल बी एक्सपेंशनरी, राइट? तो अब यहाँ पे हम डायग्राम लेते हैं, दिस इज आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे ले लिया, राइट? सो दिस इज वन इनिशियल कर्व हम ले रहे हैं, IS0, दिस इज LM0, ये LM0 ले लिया, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हमें सरप्लस शो करना है तो हम बीबी कर्व जो है इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे ले लिया, दिस इज इक्विलिब्रियम, राइट? अब ये हमारा जो है, दिस इज आर Y0, ये हमारा Y0 आ गया। नाउ वी सपोज, अब ये देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है और ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। अब डायग्राम इसी ध्यान से बनाओ कि IS0 नीचे की तरफ शिफ्ट करना है और LM अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो अगर कहीं यहाँ बनाते हो पॉइंट तो तुम देखोगे यहाँ पे LM हमारा रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, पर हमें रिस्ट्रिक्टिव नहीं चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में हम रिस्ट्रिक्टिव नहीं ले रहे हैं, हम एक्सपेंशनरी शो कर रहे हैं, राइट? सो इन दैट केस हम जो है अपने डायग्राम में जो पॉइंट है, वी विल मेक समवेयर ओवर हियर, जहां पे हमारी IS जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी आए, और जो हमारी LM पॉलिसी है, एक हमें एक्सपेंशनरी चाहिए है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम इन अंदर की तरफ बनाएंगे। जो हमें पॉलिसी कॉम्बिनेशन हमने बनाया है उसी हिसाब से हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते वक्त ये जो इस डायग्राम्स में ये कंफ्यूजन होती है कि हमें बेसिकली कहाँ बनाना है, इसीलिए पहले ही पॉलिसी का जो हमने यहाँ पे ले लिया, तो वी विल मेक सपोज यहाँ पे हमारा जो है YF फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी आएगी फ्रॉम LM0 टू LM1, और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो कॉन्ट्रैक्शनरी लेंगे, जिसकी वजह से IS कर्व जो है वो IS0 से IS1 पे शिफ्ट हो। इज दैट क्लियर? राइट? सो ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा आ रहा है। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, these combinations can be different, ये combinations different हो सकते हैं depending on what is the situation in the economy. So ये सिर्फ एक तुम्हें glimpse है कि कैसे इस mix के through problems को solve किया जा सकता है। I'm again and again telling you, but जरूरी नहीं है कि जब भी इन्फ्लेशन और सरप्लस होगा तो यही कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा। इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ही होंगी, बट सपोज जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज तुम्हारा इक्विलिब्रियम इतना गैप होता
तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू Y0, तब इस पर्टिकुलर केस में यू कैन सी कि जो तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस पर्टिकुलर केस में तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो टोटली डिपेंड्स कि बीबी कर्व की स्लोप क्या है, बीबी कर्व किस तरीके का है, गैप कितना ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और कौन सी पॉलिसीज कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट रिजल्ट ला सकता है, राइट। सो वो सिचुएशंस पे ही डिपेंड करेगा। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो तो नॉर्मली फिस्कल पॉलिसी हम कॉन्ट्रैक्शनरी लेते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी होती है। बट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा ही होता है। दैट depends on the problem to problem, that depends on the situation of the economy, that depends on the policy effectiveness in the economy कि कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स में एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? राइट। सो दिस इज वन। सो इसलिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये मत सोच के चलना कि हर सिचुएशन में ये ऐसा होगा, राइट। और अगर सिचुएशन ये थी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये हम कर रहे हैं बिल्कुल जनरलाइज्ड कि नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मली इस तरीके के कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में दैट मींस हमारे 4 कॉम्बिनेशंस बने, internal unemployment, BOP deficit, and internal inflation, BOP deficit, internal unemployment, BOP surplus, internal inflation and BOP surplus। अब इसको हम यहाँ पे अगर एक टेबल फॉर्म में क्रक्स के फॉर्म में ले लें, so if there is fixed exchange rate system, अगर हमारा fixed exchange rate system है, then in that case if we are talking about monetary policy and fiscal policy and we are taking 4 combinations, अगर हम 4 combinations की बात कर रहे हैं, one is internal unemployment and BOP deficit, this is first, then internal inflation and BOP deficit, then internal unemployment and surplus, BOP surplus, and internal inflation and BOP surplus। ये 4 प्रॉब्लम्स अगर हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। देन इन दैट केस फर्स्ट अगर हम इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट है एंड फिस्कल पॉलिसी विल बी एक्सपेंशनरी, हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन में, और बीओपी डेफिसिट भी है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन है देन इन दैट केस contractionary monetary policy, and in order to achieve the resolve the problem of deficit along with it, we are saying contractionary monetary policy। surplus में expansionary monetary policy, surplus है expansionary monetary policy, inflation है contractionary fiscal policy, inflation है contractionary unemployment है तो this will be expansionary, unemployment expansionary fiscal policy और inflation है contractionary fiscal policy। is that clear? yes तो ये हमारे पास different combinations आ गए। ये हमने situations ली उसके हिसाब से हमने बताया कि इस तरीके का policy mix जो है वो adopt किया जा सकता है, right? now हमारे पास आता है flexible exchange rate system। फ्लेक्सिबल जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट हम फिनिश कर देंगे और इसके नोट्स जो हैं मैं ऑलरेडी क्लासरूम में अपलोड कर चुकी हूँ।